Gregor Johann Mendel, born in 1822 and died in 1884. He came to Brunn and joined monastery there. In 1848, he was appointed as a priest at monastery in Brunn. In 1856, he started to collect various varieties of garden pea plant, scientific name Pisum sativum, and then performed hybridization experiments for 7 years in between 1856 to 1863. In 1865, at Natural History Society, Brunn, he published his research papers, his hybridization experiments results along with generalization, which were later referred as rules, and at that time his work was largely ignored and no one believed in his work and his work was neglected. He died unfortunately in 1884, and after his death about 1900, three scientists, Karl Correns, Van Sermark and Hugo de Vries, independently and almost simultaneously rediscovered his work. His work was then recognized, and because of a discovery of chromosomes, his concept of factors were then considered as a concept of genes, and then he was widely recognized. After even his death, or about 150 years after his work, till today his work is considered as a legendary, and his name as a father of genetics is immortal. So we will now start which characters were studied by John Mendel in garden pea plant. Garden pea plant, scientific name Pisum sativum, belongs to Fabaceae family, and it is a leguminous plant having a bisexual flower. Mendel noticed that garden pea plant had a wide varieties of contrasting characters. He chose 7 characters, and in each character he studied 2 contrasting traits. I repeat, Mendel studied 7 characters in garden pea plants, and in each character he observed 2 contrasting traits. For example, if we considered character number 1 as a stem height, then he observed that there were 2 types of garden pea plants. Some garden pea plants were tall, so one trait is a tall trait, while another variety of a garden pea plant were dwarf. So in case of a character stem height, there were 2 alternative contrasting trait, tall stem and dwarf stem or a short stem. Similarly, when he studied another character, that is the flower color, there were 2 varieties of a garden pea plant. One garden pea plant variety was having a purple flower, while another garden pea plant variety was having a white flower. Similarly, in case of a flower position, one variety was having a axial flower position, another variety was having a terminal flower position. Fourth character was a seed shape. One variety was having a round seed, another variety was having a wrinkle seed. Another character, fifth character, is a seed color, yellow and green. Pod shape, inflated means a full, and constricted. Then pod color, that is the one variety was having a green pod color and another variety was having a yellow pod color. He observed that in a single pea plant there cannot be 2 opposing contrasting trait for a one character present at a given point of a time. मतलब क्या होता है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक सिंगल पी प्लांट में ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े फ्लावर पर्पल हो और थोड़े फ्लावर वाइट हो, या तो फ्लावर पर्पल हो सकते हैं या तो फ्लावर वाइट हो सकते हैं. इन शॉर्ट, मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स का ऑब्जर्वेशन किया. हर एक कैरेक्टर में उन्होंने 2 वैकल्पिक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखे. जैसे कि अगर हम स्टेम हाइट की बारे में बात करें तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो जाते हैं.
वैकल्पिक लक्षण हो जाते हैं टॉल स्टेम एंड ड्वार्फ स्टेम। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मेंडल ऑब्जर्व्ड 7 कैरेक्टर्स एंड ईच कैरेक्टर वाज हैविंग अ 2 opposing contrasting trait. So all in all he observed 14 different contrasting traits in a garden pea plant. Now Mendel first created true breeding pure line for each contrasting trait. I repeat, before starting his hybridization experiments, Mendel created true breeding पी लाइन फॉर ईच कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए उससे पहले ही उन्होंने हर एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन का क्रिएशन किया। नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन? बाय continuous self pollination for a several generation resulted in a creation of a true breeding pure line. Even before Mendel's era, before Mendel's work, everyone knew at that time, especially those who are concerned with plant and animal breeding. बराबर, मेंडल का जो काम था उससे पहले ही जो पर्सन प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग के साथ कंसर्न थे वो ये जानते थे कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाए तो जो लाइन क्रिएट होती है वो प्योर होती है। इसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहा जाता है। मैं रिपीट करूं कि मेंडल के काम से पहले ही जो एनिमल और प्लांट ब्रीडर्स थे वो जानते थे कि कोई ऑर्गेनिज्म में, प्लांट हो या तो एनिमल हो, उसके अंदर अगर कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाए तो अल्टीमेटली प्योर लाइन क्रिएट होती थी। तो मेंडल भी वो जानते थे कि अगर पी प्लांट के अंदर कंटिन्यूस सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाएगा तो कोई एक जो कैरेक्टर है वो स्टेबल हो जाएगा और आफ्टर डूइंग अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन फॉर सेवरल जनरेशन जो भी प्लांट्स मिलते हैं उसको ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन कहा जाता है और ट्रू ब्रीडिंग हम यहाँ पे पी लाइन कहेंगे। तो मेंडल क्रिएटेड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स बाय सेल्फ पॉलिनेटिंग पी प्लांट्स फॉर अ सेवरल जनरेशन। उन्होंने सेवरल जनरेशन के लिए उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया और बाद में ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन क्रिएट की। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे उन्होंने पहले टॉल प्लांट लिया। अब टॉल प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन का यूज करके उसी प्लांट के फ्लावर के पिस्टिल को उन्होंने फर्टिलाइज किया। जो भी प्रोजेनी मिली उसमें वापस टॉल प्रोजेनी के उन्होंने सिलेक्ट किया। बाद में वही टॉल प्रोजेनी का पोलन ग्रेन लेके वही उसी प्लांट के पिस्टिल को उन्होंने एक्चुअली पॉलिनेट किया। तो कंटिन्यूसली ऐसे करते करते जो भी टॉल प्लांट मिले उन्होंने इसको कहा कि इट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन और अ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन फॉर अ टॉलनेस। तो ऐसे जो टॉल प्लांट होते हैं उनमें ड्वार्फनेस का कोई कैरेक्टर मिक्स नहीं होता है, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ अ प्योर पी लाइन। ऐसा ही उन्होंने ड्वार्फ प्लांट के लिए किया। पहले उन्होंने ड्वार्फ प्लांट लिया, बाद में ड्वार्फ प्लांट के पोलन ग्रेन का यूज करके उसी प्लांट के पिस्टिल को पॉलिनेट किया और जो भी प्रोजेनी मिली उसमें ड्वार्फ प्लांट्स को वापस सिलेक्ट किया और ड्वार्फ प्लांट जो प्रोजेनी थी उसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया और ऐसे सेवरल जनरेशन के करने के बाद जो भी मिला इसको उन्होंने कहा कि इट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ पी लाइन। Now, as you know, there were 7 characters and 14 total contrasting traits. So he created 14 true breeding pure P line. For example, one P line was a true breeding line for a purple flower, another was for a white flower. A true breeding pure line was for a axial position and another was for a terminal पोजिशन। सो ऐसे मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स के लिए 14 ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन क्रिएट किया। बाद में देन ही परफॉर्म्ड आर्टिफिशियल सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग दिस ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन। अ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन was having or is having a स्टेबल कैरेक्टर फॉर अ सेवरल जनरेशन और उसके अंदर एक कैरेक्टर प्योर होता है, किसी दूसरे कैरेक्टर का या तो दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होता है। आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इसको चूज करते हो, से फॉर एग्जांपल पर्पल फ्लावर ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन, तो इट
cannot have a white flower character within it. It is a true for a purple flower. और white flower वाली जो P लाइन होती है वो white के लिए प्योर है, उसमें purple flower का कोई character mix नहीं हो सकता है. So he performed hybridization experiments using this true breeding P line and then he concluded his generalization or a laws using this true breeding P line.